Are you ready to push past your limits? So hi guys, my name is Yash. I have been working around for around 3 to 4 years और आज मैं आपको एक चेस्ट ट्राइसेप वर्कआउट दिखाने वाला हूँ which will be primarily focused to resistance bands and only your body weight. The advantage of using our resistance band is that you can carry it anywhere. It is very inexpensive and the other plus point is that it is not prone to injury क्योंकि आजकल मैंने देखता हूँ लोग डम्बल्स यूज़ करते हैं so वो इंजरी के लिए बहुत प्रोन होता है and with resistance band you can get a more stretch and you can freely work out and you can carry it anywhere. So guys, first we will be starting with push-ups जो कि नॉर्मल पुशअप्स होते हैं. इसमें भी मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग एकदम गलत फॉर्म में करते हैं. So I will explain you once. Just get down on your knees. Place your hands up to your shoulder level. ज़्यादा वाइड भी नहीं, ज़्यादा पास भी नहीं. Up to your shoulder level. Then arch your back a bit. इतना भी नहीं करना, एकदम नीचे भी जाना नहीं. This is the perfect level. Then go down. Slowly, slowly, slowly. Up. 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 इसके आप 15 to 18 सेट्स कर सकते हो, 15 to 18 reps कर सकते हो. This is basically to warm up your body. So let's do it. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So you can just move your hands and all to warm up a bit. Make sure कि आप ब्रेक बहुत कम भी ना लो और ज़्यादा भी ना लो. For me 30 to 45 seconds का break is very optimal. Now we'll move to the second set which will be around 12 to 15 reps. This is again the same to warm up your body. So again the same thing, hands on your shoulder level, back arch, move down, up, up, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Again move your hands. अभी बिगनर टू इंटरमीडिएट लेवल्स में मैं देखता हूँ कि लोग पुशअप्स लोगों को बहुत इजीली हो जाते हैं और घर पे वन थिंग वी कैन डू इज दिस. एक 5 kgs का आता है, एक 15 kgs का आता है और एक 20 kgs का आता है. दिस इज द 15 वन विच विल पुश यू टू अ लिमिट and you can use this as weights for your back when you do push-ups. So I will tell you the form once. You have to like this, lock it on your upper back, go down like this. यहाँ पे thumb पे lock कर दो. See, you're getting a bit pressure on your back. So when you come up, when you go down, breathe out. So आपको ये समझ गया होगा. This is basically जिम में मैं देखता हूँ लोग वेट्स रखते हैं बैक पे. द प्लेट्स जो होते हैं वो बैक पे रखते हैं और एंड द वर्कआउट पुशअप्स. बट दिस इज़ वेरी ऑप्टिमल. ये आप कहाँ पे भी लेके जा सकते हो. आप कहाँ पे ट्रिप पे जा रहे हो सो यू कैन यूज़ दिस एंड इट्स फ्री. इट्स वेरी इनएक्सपेंसिव. सो विल डू द सेकेंड सेट ऑल्सो विद द सेम बैंड. With this we can try up to 15 to 12 reps. I guess that's a decent amount of number. So we'll start again. Lock it on your upper back. Down on your knees. Straight on your shoulder level. Go back. 1. Again in this thing 10 to 12 reps are okay. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
सो हेलो गाइस, दिस विल बी आवर थर्ड एक्सरसाइज। अभी हम करने वाले हैं चेस्ट प्रेस। सो बेसिकली लोग बोलते हैं कि डंबल नहीं है घर पे, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। सो व्हेन यू हैव अ रेजिस्टेंस बैंड, you can simply do chest press, which will engage your upper chest and your mid chest, and it will focus on your good results. So basically hold the band like this, take it back on your upper back like this, you can say it, then hold this. You can take a neutral grip or a false grip, it's up to you. Push. You can do almost 15 to 18 reps क्योंकि रेजिस्टेंस बैंड में there will not be a like a heavy amount of weight. It's very moderate, so you can push up to 18 to 20 reps also. So start with it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 18. So मैंने आपको पहले ही बोला था, this is 15 kg. Now we will obviously increase the weight क्योंकि प्रोग्रेसिव ओवरलोड होना ही चाहिए. So now we take the 21. And also in between you can rest for around 30 to 45 seconds क्योंकि उतना रेस्ट चाहिए आपके बॉडी को. ऑल्सो मैंने देखा है when people gradually move to intermediate level, वो सेट्स के बीच में पुशअप स्टार्ट करते हैं. So you can do that once you reach a certain level. Again the same thing, the 20 kg band, hold it like this, take it back on your upper back, on your mid back, stretch it, straight, come back, push, push, push. We'll do 12 reps of this. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. So now जैसे कि मैंने आपको बोला, you can always do push-ups between. So now we'll try explosive push-ups जिसमें आपको फॉर्म सेम रखना है, but when you come up you have to push your arms. So I will show it once. Again, go down on these, on the shoulder level, go down, and now when you go down, while coming up you have to push your arms. This will give you a very good pump which will result in a decent amount of muscle mass on your chest. Push, push. So now you can rest for another 15 to 20 seconds, and then we will start with the chest flies, which will again be with the resistance bands. Again, move your arms a bit. Also, I would recommend to the beginners, it's not very important to push like very hard, so you don't get the recovery time. So always know your limits and then plan your workout accordingly. So now we'll start with the chest flies. It will again be with the 15 kg band for your first set. And now I will explain you the difference between the chest press and the chest flies. Chest press was like this one, like this. But the flies will be way different. You have to make your arms a little wide, like this. And now this. This will focus on your upper chest more. Like this. Now we will do 15 to 18 reps of this, and now we will start with it. Again the same thing, on your upper back, take your arms wide, stretch it a bit, and now we'll go up like this.
7, 8, 9, 10, 11. Again, as I mentioned earlier, you can do the push-ups thing in between your sets to get a good warm-up. So your muscles also don't take much tension when you work out. Now we'll repeat the same set with a 20 kg band. So as you see this, it's a 20 kg band. Again the same thing. Take it, move it back on your upper back. Stretch your arms. Now 1, 3, 5, 8, 9, and the last one 10. So guys, we just completed chest with the help of the resistance band and now we'll be moving to tricep जिसमें हम बेसिकली पुशअप करेंगे. आपने सुना ही होगा डायमंड पुशअप. सो आई विल शो यू द फॉर्म. इसमें आपको बेसिकली नॉर्मल पुशअप्स में हम हाथ यहाँ पे रखते हैं. इन दिस विल फॉर्म अ डायमंड विथ योर पाम्स लाइक दिस. विल कीप इट डाउन एंड नाउ व्हेन यू गो डाउन, लोग गलतियाँ करते हैं. पीपल डू दिस. यू हैव टू make sure you take your elbow a little backwards like this so it comes to your tricep, and when you come up your tricep gets expanded and it's very good. इसके आप 3 से 4 सेट कर सकते हो एंड विथ ईच रेपिटेशन ऑफ 15 to 20. या सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो. हमने ये वीडियो में बेसिकली 5 एक्सरसाइज कवर किए जिसमें वी स्टार्टेड विद पुशअप्स विच इज़ वेरी नेसेसरी फॉर योर वार्म अप, एंड देन वी डिड द डायमंड पुशअप्स इन द लास्ट. दोनों में फ़र्क इतना ही है कि डायमंड पुशअप्स में द मेन फोकस इज ऑन योर ट्राइसेप एंड नॉर्मल पुशअप्स में द फोकस इज ऑन योर शोल्डर्स एंड योर चेस्ट. हमने रेजिस्टेंस बैंड के साथ चेस्ट प्रेस भी किए, चेस्ट फ्लाइज भी किए, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू मेक अ पॉइंट दोनों में डिफरेंस क्या है, बिकॉज व्हेन यू डोंट नो द डिफरेंस उतना फ़र्क पड़ेगा नहीं आपके मसल्स पे. सो यू हैव टू पे अटेंशन ऑन दी फॉर्म्स. एंड नाउ in the last we did the diamond push-ups which is very necessary for your triceps. So yeah, that's for the video. Thank you.